Welcome to SDMIC Classes. This is my regular advice to you. Nothing is impossible for a brave and hardworking person with a willing mind. We are continuing with the chapter 1. This is a part 6 recorded class. Chapter 1 is Introduction to Bookkeeping and Accountancy. Hope you must have watched my previous 5 video classes. I believe you all must have understood. Now, I request you to pay attention. In our previous class, we learned, last we discussed the importance of accounting concepts. Now, some of the important concepts are, we will discuss business entity concept, money measurement concept, cost concept, consistency concept, conservatism concept, going concern concept, realization concept, accrual concept, dual aspect concept, disclosure concept, materiality concept, matching concept. These are the 12 concepts we are going to discuss in this class. And in the next class, we will discuss about accounting standards and International Financial Reporting Standards, IFRS, and the need for accounting standards. This we will discuss in next class, and in this class we will discuss the 12 points of the accounting concepts. Now let us start. Business entity concept. What is a business entity concept? Business is a separate person. When we do the business is a separate person. That means the owner invest his money into the business, and the business has to return that investment along with his profit or to the owner. So while doing the business, we have to separate the business from the owner. That means both are individuals, both are considered as separate. Let us imagine that the person who is giving a loan to the business, means the owner is giving some funds to the business, and the business is a separate entity, and that is giving to the business, and the business has to return back to the owner with profit. So business units are distinct and separate from its owner or owners who invest their money into the business. I think you understood this point. So when the owner and the business are separate, and the business has a separate existence, separate. Accounts are prepared from the point of view of the business and not from the point of view of the owners, because business is liable to the owner for the money or capital he or she invested into the business. Why he is doing investing the money into the business? If somebody is giving a loan, they will take the interest along with the principal amount. So they have to get back that interest. Same way, when the owner invests the money into the business, means he has to get the return by way of profit. That is the thing. The personal transactions are not recorded in the books of accounts. Only business transactions are recorded in the books of accounts. So that means when the personal transactions of an owner means his day-to-day means household or any other personal matter, means not related to the accounts, not related to the business, are not recorded in the books of accounts of the firm or the company or the business. Whereas any expenditure incurred by the owner as for the business is considered as a expenditure for the business, that will be recorded. You understood this? Any expenses, any transaction in nature of personal transaction not related to the business is not recorded in the books of accounts of the business. Cash or kind
taken by the owner from the business for his personal use shall be treated as drawings. Means any thing withdrawn means of any means any material or any other thing taken for his personal use from the business is considered as a drawing. Whereas and as same way cash withdrawn by the owner for his personal use from the business is treated as a drawing. Second concept is money measurement concept. That means that this concept implies that the transaction which can be expressed in terms of money. Any transaction which can be expressed in terms of money means anything, whatever means a transaction is happening, that should have some value. Are recorded in the books of accounts since value of goods and services are expressed in terms of money. Without that, that cannot be entered in the books of accounts. So there should be some value for any service or any material or any kind of thing. That should have some value. Then only it should be can be entered in the books of accounts. The ruling currency of a country is the measuring unit of for accounting. For example, if it is in US, it is a dollar, and if it is in Britain, it is pound, and whereas in India, it is rupees. So the ruling currency of the country is the measuring unit of the accounting. Is considered for accounting. Now, cost concept. An asset is recorded in the books on the basis of historical cost or acquisition cost. Means whatever is the cost. For example, if it is a material purchase for 1 lakh rupees, and so it will be booked at the rate of at the value of 1 lakh rupees. That means the cost of acquisition is 1 lakh, or the historical cost of the material is 1 lakh. So that will be recorded entered in the books of accounts 1 lakh. Any material purchase is booked at the price paid for it. कितना पैसा दिया है उतने का ही मीन्स वो एंट्री करेगा, वो बुक में एंट्री करेगा. Cost of acquisition will be base for all further accounting. जो मटेरियल जो लिया है, जो एक्विजिशन में जो लेते टाइम में जो प्राइस दिया है वही एंट्री होएगा. Whereas after recording the cost of the asset, the value will keep changing after providing depreciation or sometime appreciation on revaluation and stock at cost or market value. रिकॉर्डिंग होने के बाद में समझो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में शायद suppose it is invested in a land or any property, the property will keep appreciating. Whereas if it is in a machinery or any other material, that keep depreciating, so the value will reduce. And sometimes when while considering the means, for example 50 लाख का कुछ मशीनरी लिया रहेगा, वो 50 लाख का मशीनरी एक 5 साल के बाद में उसका वैल्यूएशन करते टाइम सेम मशीनरी लेने जाएगा तो शायद 2 करोड़ हुआ रहेगा. सो जो डिफरेंस जो रहता है तो उसका डिप्रिशिएटेड वैल्यू और उसका जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू क्या है वो देखेगा, उसके अनुसार होगा. सेम में कौन जो भी स्टॉक्स लेगा, और स्टॉक्स आज के तारीख में शायद 10 लाख का जो स्टॉक रहेगा वो 10 लाख का एक्चुअल बुक वैल्यू स्टॉक 10 लाख रहेगा. वो 10 लाख का स्टॉक अगर मार्केट में वो पर्टिकुलर आगे जाके थोड़ा टाइम में वो जो मेटल का प्राइस बढ़ गया और वैल्यू होगा समझो 15 लाख, तो वो कॉस्ट आगे पीछे होता रहता है. तो द थिंग इज दैट बुक में कितना वैल्यू होगा, वो जो है एक्विजिशन कॉस्ट जितना भी है परचेस किया है वही वैल्यू में बुकिंग होगा, मीन्स एंट्री होगा. रिवेल्यूशन के टाइम में अगर रिवेल्यूशन फॉर एग्जांपल हम कुछ पर्पस के लिए जो कुछ रिवेल्यूशन होते हैं वो रिवेल्यूशन के टाइम में और रिवेल्यूशन में जो इफेक्ट होता है उसका चेंजेस करते हैं. अदरवाइज इट विल कीप मेंटेनिंग एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. नाउ consistency concept. Any policy adopted for accounting should be continuous for or consistent throughout the business, and it need not be changed generally unless and until circumstances demand. For example, एक कुछ अकाउंटिंग जो मेंटेन करने का कुछ पॉलिसी रहता है, वो पॉलिसी एक पर्टिकुलर मेथड में, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है और डब्ल्यूडी में रिटर्न डाउन वैल्यू में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है. तो जो पॉलिसी जो अडेप्ट किया है सेम वे वैल्यूएशन जो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और समटाइम्स लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट,
ये मेथड में जो वैल्यूएशन करते हैं, ये जो पॉलिसी जो अडॉप्ट किया है वो पॉलिसी वो कंटिन्यू करते रहेगा, मीन्स हर साल तो चेंज नहीं करते रहेगा। एक अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ सर्कमस्टेंसेस रिक्वायरमेंट, कुछ सपोज कुछ नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने का, या नहीं तो कोई कुछ पब्लिक इशू के लिए कुछ कंपनी को जाने का है, सो दैट टाइम ना तो वो जो रिवैल्यूएशन होता है, दैट टिल दैट टाइम अनलेस एंड अनटिल दैट सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर द पॉलिसी विल कीप कंटिन्यूइंग। तो मतलब कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट किया है, मतलब एक दो कुछ पॉलिसी रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए, उसके हिसाब से वो पॉलिसी को वो जो अडॉप्ट किया है वो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ सर्कमस्टेंसेस रिक्वायरमेंट। However, it does not stop any improvement in new techniques. कुछ नया टेक्निक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का है, कुछ करना है, कुछ टेक्निक्स को जो एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का है, उसका कुछ स्टॉप ये इसको बाधा नहीं होता, इसको कुछ स्टॉप नहीं करता है। इट शुड बी डिस्क्लोज विद अ नोट, खाली इतना ही है कि उसको एक नोट से वो ये जो नया इम्प्रूवमेंट के लिए ये किया है करके एक नोट बैलेंस शीट में देना पड़ता है। आई थिंक ये जो चार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। Now let us move to the other concept, conservatism concept. While recording the business transaction, we have to anticipate no profit but provide for all the possible losses. ये क्यों करते हैं? मतलब जो possible losses को consider ये करके जो ये करके imagine करके या कुछ ये करके वो business को ये जो accounting करते हैं। Reason क्या है? For example, कुछ भी अगर समझो बिजनेस अगर समझो हम लोग प्रॉफिट में है करके ऐसा ये करते रहेगा, करते 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 जाएगा, मतलब सब प्रॉफिट में, बट एक्चुअली क्या होता है वो मालूम नहीं पड़ता है। तो जो ये करते कंसिडर करते में देयर आर some other things also can happen, मतलब some other unexpected expenditure also can get into that while doing the entries, so while doing the business. So what happens, suppose एक हमेशा वो जो अकाउंटेंट जो ये जो प्रॉफिट में जो एंट्री सब मैक्सिमम प्रॉफिट में दिखाएगा, तो उसके बीच में अगर कुछ जो कैलकुलेट किया, अगर 10 लाख का प्रॉफिट हो गया साल का, तो वो उसके बीच में अगर वो जो अनरिकॉर्डेड कुछ एक्सपेंडिचर आ गया, कुछ परचेज का बिल एंट्री नहीं हुआ, या कुछ ये कुछ नहीं हुआ है, या कुछ एक्सपेंडिचर जो लेना था वो लिया नहीं है, तो व्हाट हैपेंस, तो जो आ गया, तो जो एक्सपेक्ट किया है वो जो प्रॉफिट अगर समझो 10 लाख का रहेगा, जो 15 लाख का और एडिशनल खर्चा हो गया तो सीधा लॉस में गया। तो वो जो 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 ये जो प्रोबेबिलिटी को, ये जो पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करके जो जो इतना जो प्रॉफिट को थोड़ा मिनिमाइज करके जाता है, मतलब पॉसिबल लॉसेस को सोच के आगे जो ये करते रहते हैं। In that case, if there is a profitability, if the organization receives, then it will be a very interesting, and it will be very means motivation to the organization. It encourages certain secret reserves by making excess provision to the prevent the losses. इसमें क्या होता है that it encourages, मतलब it motivates or it encourages the certain secret reserves by making excess provision to prevent the losses. अगर समझो वो जो इसमें अगर 10 लाख में अगर समझो वो प्रॉफिट आ गया, तो समझो एक्चुअली उतना ही आ गया, तो फिर वो होता है मीन्स, मतलब हम लोग ने जो ये प्रॉफिट कंसिडर किया था 5 लाख इंस्टेड ऑफ गेटिंग 10 लाख, तो जो प्रॉफिट का जो 5 लाख का कंसिडर करके जा रहा था उसमें अगर 10 लाख आ गया तो प्रॉफिट आ गया, तो दैट मीन्स कैन कीप एन एक्स्ट्रा रिजर्व, एक्सेस रिजर्व जनरेट कर सकता है, so that will be better instead of showing means that means profit ज़्यादा है करके बोल के जो लास्ट में जो लॉस में आ गया, तो that will be a difficult situation. whereas लॉस इतना मीन्स जो ऑलमोस्ट प्रॉफिट को रिड्यूस करके इतना जो मिनिमाइज करके जाता है, और मैक्सिमम ज़्यादा प्रॉफिट आते तो देयर विल बी a possibility of creating excess reserves. The income statement may show lower income, and the balance sheet overstate the liabilities and understate the assets. The income statement may show lower income and balance sheet overstates the liabilities. इसमें क्या होता है, जो income lower दिखाएगा और liabilities को ज़्यादा दिखाएगा, and understate the assets, assets को कम दिखाएगा। तो and this policy of recording is asking the accountant to play safe, मतलब जो सेफ गेम करने का, सेफ ये करने का, while writing the accounts, ये एक अकाउंटेंट के प्ले गेम मतलब प्ले सेफ, सेफ गेम जो ये करने का एक मेथड है।
Hope you understood this as a conservatism concept. It's not that much difficult. Going concern concept. Term itself is means explains. This is self-explanatory. All the means this concepts now these are given as a self-explanatory. That the term itself is making a means just a explanation. Going concern concept. Business is a going concern and will continue its operation for future. मतलब बिजनेस बोलेगा तो एक गोइंग कंसर्न है, कंटिन्यू चलते रहेगा. अभी हम लोग ने जो प्रीवियस इसमें बताया था वो जो इन्वेस्टर पैसा डाल रहा है वो कंटिन्यू ये होते रहेगा. और आई होप आई विल शो यू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड द कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. इसमें जो है वो जितना मीन्स जो 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 है बिजनेस वो आगे चलते रहेगा. It should not, it will not stop like that. It is it keep going. Business is a going concern and will continue its operation for future. Going concern concept influences accounting practices in relation to the valuation of assets and liabilities, depreciation of fixed assets, treatment of outstanding and prepaid expenses, accrued and unearned revenues. Going concern concept influences accounting practices in relation to the valuation of assets and liabilities, depreciation of fixed assets, treatment of outstanding and prepaid expenses, accrued and unearned revenues. ये जो गोइंग कंसर्न जो होता है वो ये जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करता है, उसको स्वाधीन करते हैं. वो क्या होता है ये इसमें क्या होता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज और डिप्रिसिएशन, ये सब जो जो ट्रीटमेंट को जो मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है या अर्नड रेवेन्यू अक्रूड इनकम, ये सब का जो ये होता है जो कोई गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. एंड यू द सिंपल थिंग इज दैट बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न, मतलब वो रुकेगा नहीं, वो आगे चलते रहेगा. जो ये बिजनेस का ओनर्स चेंज हो सकता है, चेंजेस हो सकता है बिजनेस, बट स्टिल सपोज अभी हम लोग ने कोई कोई जो कंपनी में देखा रहेगा सिंस 1980 सिंस 1960 ये जो सब चीज़ जो होता है मतलब क्या है नो 1960 से अभी तक उसका जो ओनर्स जो मेन जो ओनर्स है वो तो एक दो तो मीन्स जो एक्सपायर हुआ रहेगा या नहीं रहेगा या रिटायरमेंट हुआ रहेगा, बट द बिजनेस इज स्टिल गोइंग. दैट इज अ सिंपल थिंग. बिजनेस ये नहीं होता है ओनर्स या पार्टनर्स या डायरेक्टर या कोई भी है जो उसका ओनर्स बदली हो सकते हैं, बट बिजनेस कंटिन्यू होते रहेगा अनलेस एंड अनटिल वो बिजनेस क्लोज डाउन नहीं होएगा, तब तक वो बिजनेस चलते रहेगा. Now the realization concept. Income is recorded only when it is realized. जब भी income जब realize होता है या income earn हो गया तो उसको record होता है. Either it is received or earned. Revenues are recorded only when sales are affected or services are rendered. Revenues income कभी होता है जो मिला है तो उसको record होता है, या नहीं तो उसको रिसीव्ड और अर्नड जो मिला है मतलब जो अभी मतलब काम हो गया है और पैसा मिलने वाला है. दैट इज द थिंग, सिंपल थिंग. और रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द सेल्स और अफेक्टेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड. रेवेन्यू कभी रिकॉर्ड होता है जब सेल्स हुआ है, उसका पैसा मिला या नहीं मिला दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट सेल्स हो गया है और सर्विसेज किया है, सर्विसेज दिया है तो वो उसका रिकॉर्डिंग होता है. दैट इज द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. सेल्स रेवेन्यूज आर कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड when sales are affected during the accounting period, irrespective of the fact whether cash is received or not. This is already explained. Means मतलब sales हुआ है, पैसा बाद में मिलेगा, मतलब क्रेडिट पे सेल किया है, उधारी पे मटेरियल दिया है, या नहीं तो कुछ सर्विसेज दिया है उसका पैसा अभी नहीं दिया है, 15 दिन के बाद में या महीने के बाद में देंगे, बट द सर्विसेज रेंडेड द इनकम इज ऑलरेडी मतलब रेवेन्यू इज ऑलरेडी एश्योर्ड, मतलब वो जो काम मिलने किया है उसका पैसा मिलने वाला है या जो मटेरियल दिया है उसका पैसा मिलने वाला है. सो द रिकॉर्डिंग इज डन, ऑलरेडी डन फॉर द रेवेन्यू. यू गॉट इट. तो यू अंडरस्टूड द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ना, मतलब जो भी काम हो गया है, पैसा मिला या नहीं मिला है, लेकिन उसका जो काम हो गया है तो उसका या जो मटेरियल दिया है सेल हो गया है उसका एंट्री होगा, रिकॉर्डिंग होगा.
That is the realization concept. Accrual concept. Accrual concept वो जो the term itself is accrue means जो जमा होता है ना ऐसा, oh, that is the thing. Income is recorded when it is accrued or earned. Income जो record करेगा जब भी it is accrued. इसे almost realization concept जैसा ही है. मतलब वो accrued for example एक 50 I will read it and then explain it. Income is recorded when it is accrued or earned, and expenses are recorded when they are accrued or become payable. All expenses and revenues related to the accounting period are to be considered and recorded irrespective of the fact the revenues are received in cash or not, or expenses are paid in cash or not. मतलब क्या कहते हैं एक जो भी इनकम अर्न किया है तो उसका रिकॉर्डिंग होएगा, या कुछ एक्सपेंसेस पेमेंट करना है, एक्सपेंडिचर हो चुका है लेकिन पेमेंट किया नहीं है, बट स्टिल इट इज एन अक्रूड, इट इज पेएबल मींस एक्सपेंडिचर पेएबल, तो भी उसको रिकॉर्ड होएगा। उसका एग्जाम्पल हाँ, एक इनकम का जो बता रहा हूँ, मतलब एक आप बिजनेस एक 50 लाख का एफडी डाल दिया, 1 करोड़ का एफडी डाल दिया, तो एफडी का फिक्स डिपॉजिट डाल दिया है फ्यूचर का कुछ पर्पस के लिए, कुछ फिक्स डिपॉजिट डाल दिया, तो फिक्स डिपॉजिट का 5 साल के डाल दिया, तो हर साल में उसका जो इनकम जनरेट होता है, इंटरेस्ट जनरेट होता है, इंटरेस्ट होता है बैंक इंटरेस्ट, लेकिन बैंक ने हम लोग को जो इंटरेस्ट जो बिजनेस में जो अकाउंट में इंटरेस्ट डाला नहीं हो तो 5 साल के बाद में डालने वाला है, बट बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस उसको 5 ईयर्स का जो इनकम है उसमें से 1 साल का जो इनकम जो है, 1 साल का इनकम बोले तो जब से डाला है तब से जो अकाउंटिंग ईयर एंड आएगा तब तक का जो आता है उसका इनकम को कैलकुलेट करके उसको एक्रूड इनकम, दो इट इज नॉट रिसीव्ड बट इट इज एक्रूड मिलने वाला है, तो वो उसके हिसाब से उसको वो कैलकुलेट करके उसमें जो उसको प्रोविजन करता है। सेम वे कुछ एक्सपेंडिचर कुछ इनकर किया है, फॉर एग्जांपल कुछ मेंटेनेंस वर्क किया है, एंड ऑफ द ईयर में उसको जो एक्सपेंडिचर किया है, मतलब 31 मार्च के पहले, मतलब जो जो भी है 30 उसके इसमें कुछ एक्सपेंडिचर हुआ है, एक एक्सपेंडिचर पर पेमेंट होगा नेक्स्ट ईयर में, समझो मीन्स नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, अप्रैल मीन्स 31 मार्च के बाद में नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पेमेंट होगा, बट इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, तो उसका पेमेंट करना है तो एक्रूड है तो एक्सपेंडिचर बुक करेगा, तो that is called means that accrued means the income and expenses payable account. So you understood that means income accrued हो गया है, उसको एंट्री करेगा whether it is received in cash or not, पैसा मिला है या नहीं मिला है तो भी उसको जो इनकम हुआ है, इनकम श्योर है तो उसको रिकॉर्ड करेगा। सेम में एक्सपेंडिचर हुआ है लेकिन उसका पेमेंट कैश में या चेक में या बैंक से या किधर से भी दिया है या नहीं दिया है, इट शुड बी रिकॉर्डेड, इट विल बी रिकॉर्डेड। Got it that point? Now the other thing is that dual aspect concept. As per this concept, every transaction has two aspects, that is dual effect. This concept recognizes the fact that every debit there is a corresponding and equal amount of credit. This is the basis of entire system of double entry bookkeeping. ये हमने बहुत बार पढ़ा है, मतलब डबल एंट्री बुक कीपिंग का प्रिंसिपल ही वही है। if there is a debit there should be a credit, that is the accounting system। एक डेबिट के सामने क्रेडिट होगा, फॉर एग्जाम्पल एक मटेरियल सेल किया है तो कस्टमर को जो सेल किया है तो आइदर कैश को डेबिट करेगा और सेल्स को क्रेडिट करेगा। सेम अगर इफ इट इज अ क्रेडिट सेल मतलब उधारी पे है तो देन व्हाट विल हैपन, द कस्टमर को डेबिट करेगा और सेल्स को क्रेडिट करेगा, तो दो इफेक्ट होएगा, एक्चुअल एग्जैक्ट अमाउंट का मींस इक्वल अमाउंट होना चाहिए, मतलब डेबिट साइड का अमाउंट और क्रेडिट साइड का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुकिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नाउ 10th पॉइंट इज डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स में कुछ भी जो चीज़ है वो डिस्क्लोज होना चाहिए, जो भी यूजर्स जो आता है यूजर्स ऑफ द अकाउंट, जो भी मटेरियल जो अकाउंट्स में जो किया है दैट शुड बी डिस्क्लोज।
The accounts must disclose all material information. The accounting report should disclose full, true, and fair information to the related parties. Who are the related parties? The persons who are invested, and other means this all we have already learned in the first part. Means there are several agencies or parties involved. They require that accounting. For example, owners, shareholders, tax agencies, financial finance providers, banks, etc. Means whoever means and mainly tax authorities. These are the related parties. जो भी accounts का जो भी होता है उसका जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो होता है वो डिस्क्लोज होना चाहिए, मतलब जो छुपाना नहीं चाहिए, छुपा के ये नहीं करने का, उसको जो मेन जो है जो फैक्ट जो ट्रू एंड फेयर जो भी है क्लियर फैक्ट होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए. The financial position means the balance sheet, and financial performance means income and expenditure or profit and loss account. This all we have already learned. The financial position and performance should be disclosed honestly to all the beneficiaries. ये भी हम लोग ने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है. फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी जो उसको बेनिफिशियरीज जो है ऑलरेडी हम लोग ने एक्सप्लेन किया फ्यू एजेंसीज एंड मेनली द ओनर्स, एंड उसको जो भी जो इन्फॉर्मेशन जो है ऑनेस्टली मीन्स मतलब उसमें कुछ ये नहीं होना चाहिए हेरा फेरी या कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. ट्रू एंड फेयर एंड एकदम ऑनेस्टली एक उसका जो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. According to the convention, financial statements should disclose all the material items which might influence the decisions of the users of financial statements. ये already discuss explain किया है. उसका एक means additional elaboration है. So, according to the convention, financial statements should disclose all the material items which might influence the decisions of the यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स. जो भी फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स को जो यूज करने वाला है उसको जो डिसीजन मेकिंग वो उसको इन्फ्लुएंस करने वाला जो भी मटेरियल जो होता है वो उसमें डिस्क्लोज होना चाहिए. whereas hence any item which is not significant, उसमें जो significant नहीं है and not relevant to the users और users को relevant जो के लिए ये नहीं है उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत भी है. यूजर नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जरूरत नहीं है. 12th, matching concept. According to this concept, revenues during the accounting period are matched with the expenses incurred in that period to earn the revenue during that period. So, matching concept for explaining in furthermore. This concept is based on accrual concept and periodicity concept. Periodicity concept fixes the time for measuring performance and determining financial status. According to this concept, matching concept is, according to this concept, revenues during the accounting period are matched with the expenses incurred in that period to earn the revenue during that period. This concept is based on accrual concept and periodicity concept. Periodicity concept fixes the time frame for measuring performance and determining financial status. So now ये जो ये concept का मुताबिक मतलब ऐसे ये है कि सब जो accounting जो matching concept में कभी तो year wise या means जो month wise और year wise जो है जितना भी है जो भी पिछले 5 साल का यानी तो जितना भी है उतना साल से जो आगे कैरी होते रहे एवरी ईयर क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या होते हैं वो मैचिंग करते रहते हैं या प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का वो तो नॉर्मली जो बैलेंस शीट में आता ही रहता है, लेकिन वो पिछले 5 साल का जो करने का है सेम तो उसको कैरी करता है. लास्ट ईयर में एक जो सेल्स का क्या था, कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना घट रहा है या कितना बढ़ रहा है, ये सब चीज़ और
एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है या परचेज कितना हो रहा है या बढ़ते हैं कितना परसेंटेज बढ़ता है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ता है या कम होता है, उसके साथ कितना कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए सब ये चीज़ होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेम वे उसमें से मालूम पड़ता है उसको किधर कंट्रोल करना चाहिए, क्या है, क्यों कितना एक्सेस हो रहा है, ये सब चीज़, या व्हाट बेनिफिट वी कैन मेक मोर, ये सब जो चीज़ है। सेम वे सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या इफेक्ट हो रहा है वो भी मैचिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी में एक पर्टिकुलर सेगमेंट में मतलब वो इधर उधर सबको कैसा हो रहा है क्या है, तो उसमें वो डिसीजन मेकिंग में बहुत इफेक्ट होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट में। So I hope you understood this. So all these 12 points of the concept we have discussed. These are the important concepts. Okay. We in the previous class we learned the importance of accounting concepts, and here we learned the importance of the accounting important accounting concepts. Both are different. What is the importance of accounting concepts? That is the 5 points we discussed in the last class, and these are the 12 points of important concepts we learned. Now let us conclude. I request all my students to study regularly. If you don't understand, watch again and again, because I want all my students to score full marks in the subject or just close to 100% mark. And it is possible. Most important, you all must make a strong base in the subject that decides your career. Please read again and again, learn and practice to achieve your life's goal. My message: help each other to grow together for a better India. I request you all to share the video to reach more and more people so that many students and public can take the benefit. Many of the students may not be able to afford the classes or private classes, or some of them are, many of them are studying private and distance education or correspondent education. So for them it will be very helpful. And many of the students who want to spend money, they can also take the advantage of private classes. And there is a professional attachment, towards the professionalism, because of that piece. I was with I was doing this in the industries and industry background, and so there will be a professional approach to the classes. Actually, okay, so this will help you in the future if you get into a job or if you're going to do a business or something, okay, like that. So the maximum share so that many students can reach get it the message, they can subscribe, and then they can watch my classes, they can learn and share the videos. Okay, thank you so much.